Hello everyone and welcome back to yet another exchange. Hope you are having a beautiful session. But before I start, please let me know if my audio and video is clearly visible. चल रही है and then start with the stream. All good, yes, sir, all good. Thank you. So let's get started, guys. So first things first, we had a trade on Ethereum on Telegram, but उसने SL hit किया था. थोड़ा सा risky trade था, but that hit SL. But after that we also discussed the same fractal. तो अगर आपने वो लिया होगा, तो you kind of would have made it back. ठीक है. So let's discuss the fractal first, जो हमने share किया था, right? This is the fractal that we had shared. Right. देख सकते हैं कि प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन में आती है. Right. This was the resistance zone that we had discussed कि पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन था हमारे पास. रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद प्राइस एक हेड एंड शोल्डर्स बनाती है. हेड एंड शोल्डर्स तोड़ के ऑफ टू द रेसेस टू द डाउन साइड. सो अगेन ओवर हियर हम आए रेजिस्टेंस जोन में. रेजिस्टेंस जोन पे आके प्राइस ने एक हेड एंड शोल्डर्स बनाया एंड ऑफ टू द डाउन साइड. ठीक है. So it's very similar fractal. Come back to resistance. Come back to resistance. Make a head and shoulders breakdown. Make a head and shoulders breakdown. So that was what we were looking at on Ethereum. ठीक है. जल्दी से एक बार मार्केट अपडेट ले लेते हैं. Yesterday Bitcoin went all the way till 58,400, which is good for us. So you know why I'm telling good, because it gives us an obvious target, right? By this point, if you attended all our lives, you should be knowing what I'm going to say next. You have relatively equal lows over here, right? ये लेवल और ये लेवल, यहाँ दोनों लोज जो है काफी क्लोज टू ईच अदर है, तो सारे के सारे स्टॉप लॉसेस अभी इसके नीचे रहेंगे लोगों के. लिक्विडिटी इसके नीचे रहेगी. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट इज टू सूनर और लेटर टेक आउट दिस लिक्विडिटी and go below 58,000. So that is going to be the objective that we are looking out to accomplish on Bitcoin, and we are going to have a bias accordingly. So to support our bias on the downside, further confirmations are that we have a head and shoulders breakdown, right? You have a breakdown of head and shoulders. You are retesting again. अब ये retest कहाँ तक आएगा? I do not know, right? Do we just fall immediately, or do we come up till here, this order block, and then fall? I am not quite sure, but ये breakdown हो चुका है. Objective हमारा है towards the downside, so shorts are going to be more probable than longs. That's what I believe. ठीक है. One cause of concern for me is that यहाँ पे bullish R side divergence बन रहे हैं daily chart पे, but other than that everything else is bearish, right? So if you see liquidity, objective is bearish. You have relatively equal lows. ठीक है. Structure bearish, head and shoulders. Primary trend bearish. Price action bearish breakdown. The only bullish thing that we have right now is
RSI डाइवर्जेंस, बट ये डाइवर्जेंस जो है वो हमारे पास 4 आवर पे भी है, 4 आवर पे है, 1 आवर पे है एंड 1 डे पे. But other than that, everything is bearish. So I'm going to go with my analysis of this objective being accomplished. Right, guys. More importantly, अगर मैं इथीरियम पे भी आ जाऊँ तो इथीरियम पे भी ये ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है. Right. You have these relatively equal lows over here. These relatively equal lows. Right. प्राइस इस लो के नीचे नहीं गया, बहुत पास में आके ऊपर आ गया. तो ऑब्वियसली हमारा प्राइमरी टारगेट ये है कि हमें ये तोड़ना है टुवर्ड्स द डाउन साइड. ओके, एटलीस्ट स्वीप करना है ना. स्वीप करके तुरंत रिवर्स भी कर सकते हैं, स्वीप करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं, बट स्वीप तो करना है. सो एटलीस्ट फॉर टुडे द बायस इज गोइंग टू बी बेरिश टिल दिस ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड. नॉट जस्ट टुडे बट टिल दिस ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड. राइट. So that's the analysis for Ethereum is also supportive of the same fact for us. Okay guys, so Bitcoin and Ethereum done. Ethereum का हमारा ट्रेड जो था वो ट्रेड मतलब जो हमारा आइडिया था हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकडाउन का वो भी वैलिडेट होकर नीचे की तरफ आ गया है टारगेट की तरफ. राइट गाइस. इथेरियम पे सॉरी बिटकॉइन पे यू सी वी आर आल्सो कमिंग बैक इनटू अ बेरिश ऑर्डर. राइट. ये यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जोन है. राइट, यू कैन सी. तो यहाँ पे प्राइस ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट करके नीचे जा सकता है फिर से. फॉर एग्जांपल यू सी अ सिमिलर रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक हो हियर. राइट. तो प्राइस जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है रीटेस्ट पे सीधा नीचे जाता है. सो नाउ दिस रिट्रेसमेंट बिकम्स आवर न्यू ऑर्डर ब्लॉक. वापस प्राइस उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके जा रहा है नीचे की तरफ. और इनवैलिडेशन वुड बी इफ वी क्लोज अबाउ 61,900. 61,900 के ऊपर अगर हम चले गए तो हमारा जो बायस है वो इनवैलिडेट हो जाएगा फॉर द शॉर्ट टर्म. तब तक के लिए ये हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकडाउन जो है अच्छा खासा आ सकता है. इज व्हाट वी आर सीइंग, इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस हो गया है. एनी डाउट गाइस तो डू लेट मी. इफ आई कम ऑन गोल्ड तो गोल्ड पे वी हैड मेंशन्ड दैट गोल्ड पे डाइवर्जेंस वगैरह बन रही थी तो थोड़ा कॉशियस ऑन शॉर्ट्स ऑन गोल्ड एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. Right, gold is going towards the upside. Now from where do we want to short? First of all, why do we want to short? Why do we want to short is because you have relatively equal lows over here, right? Market will sniff out this liquidity sooner or later and उसका major support zone जो है वो around 3,900 के आसपास है नीचे की तरफ. तो इवेंचुअली मार्केट को नीचे आना है, बट देयर इज ऑल्सो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, लाइक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन. आइडियली ये जो बड़ा कैंडल बना था उसका 50% तक प्राइस रिट्रेस नहीं करना चाहिए था, उसके 50% के ऊपर. सो इसी नीचे के जोन में अगर प्राइस रिट्रेस करता दैट वुड हैव बीन बेटर एंड वी कुड हैव जस्ट ब्रोकन डाउन. राइट. बट अभी प्राइस आके ये जो पूरी कैंडल है उसको उसके ऊपर क्लोज करने वाली है, विच इज नॉट आइडियल फॉर शॉर्ट्स. बट देयर इज ऑल्सो अ सिल्वर लाइनिंग कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है. तो यहाँ पर हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन पे काफ़ी लोग लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे ये सोच के कि ये कैंडल की हाई टूट गई है, बट यू आर जस्ट डायरेक्टली सिंपली एंटरिंग इनटू, क्या हो गया, यू आर जस्ट सिंपली एंटरिंग इनटू दिस रेजिस्टेंस जोन हो गया. तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आए, देन वेट फॉर अ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑन द 1 आवर चार्ट. सो गो ऑन द 1 आवर चार्ट. 1 आवर चार्ट पे एटलीस्ट यहाँ तक प्राइस को आने दो एंड देन जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तब आप शॉर्ट ले सकते हो. यहाँ पे
यहाँ पे सेल शायद, और you can go for these lows at least as target. So the trade would probably look something like this. ठीक है. So gold पे अभी के लिए no trade. Invalidation of my bias would be only and only if we close above this high 4150. 4150 के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर जो है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इधर हायर हाई हो जाएगा, बिकॉज ये जो लो है वो ब्रेक हो जाएगा हमारा. सर ये जो लो है, जो ये जो हाई है वो ब्रेक हो जाएगा, तो यू विल मेक अ हायर, देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस शायद. सो ये मुझे इंटैक्ट चाहिए. ठीक है, 4150 इसके ऊपर जब तक हम नहीं क्लोज होते तब तक वी आर सेफ. राइट गाइस, सो होप दिस इज क्लियर. गोल्ड की एनालिसिस भी हो गई. Alright, so we are done with Bitcoin, we are done with Ethereum, we are done with gold. Guys, कोई और एनालिसिस आपको चाहिए तो प्लीज लेट मी नो in the comments and I'll try to do that. Let's scan the market for a few trades first. देखते हैं कोई ट्रेड निकल के आता है या नहीं हमारे लिए. नहीं गाइस, फिलहाल तो कोई ट्रेड मुझे दिख नहीं रहा है मार्केट में एज ऑफ नाउ. मे बी इफ वी क्लोज बिलो दिस ऑन गोल्ड तो फिर शायद हम कोई ट्रेड ले सकते हैं. राइट, तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज दिखती है मुझे तो मैं शायद कंसिडर करूंगा. अदरवाइज, बिकॉज यहाँ पे हमारी फर्स्ट बन रही है डबल टॉप विद डाइवर्जेंस, एंड दैट्स योर डाइवर्जेंस एंड दिस इज योर डबल टॉप. ठीक है, तो इसके ब्रेकडाउन पे इस पर्टिकुलर लेवल 4046 के ब्रेकडाउन पे गोल्ड पे एक शॉट हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. XAG, ओके XAG पे आ जाते हैं. Let's remove everything. First things first, market objective. Market objective is going to be this, right? Take down these lows at 55.6. तो sooner or later market को 55.6 को तोड़ने आना ही है. Now does it immediately come down or does it go up first and come down? That price action will determine. I can't say for sure for now. लेकिन one thing I know is that price अगर इसके ऊपर चली गई तो शॉर्ट्स के लिए मैं थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगा, बिकॉज आइडियली अगर हमें कंटिन्यूएशन चाहिए तो हमें ये जो पूरी बेरिश कैंडल है उसके बॉटम 50% में ही चाहिए प्राइस घूमे एंड नीचे की तरफ आए. लेकिन अगर हम ऊपर चले गए तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है. राइट, देन आई एम गोइंग टू बी कॉशियस विद शॉर्ट्स. फिर हो सकता है कि थोड़ा और हमें अपसाइड देखने मिले. फिर जब तक हमें 1 आवर पे चेंज इन स्ट्रक्चर नहीं देखने मिलता तब तक शॉर्ट करके कोई मतलब है नहीं. So yeah, caution is warranted on XAG if you close above 59.1. ठीक है.
So yeah, let's wait for this close on gold. ठीक है, रिस्की एंट्री लेते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, लेट्स सी। ठीक है गाइस, लाइव ट्रेड ऑन गोल्ड बट रिस्की। लॉल्स। ऑलमोस्ट टारगेट हिट भी हो गया विद इन द सेम कैंडल। हिट गाइस, लाइक जस्ट लुक एट दिस, टारगेट हिट भी हो गया विद इन लाइक व्हाट 30 सेकंड्स। वाह, तो ये अर्ली एंट्री काम आ गई गाइस। लाइक कर दीजिए स्ट्रीम अगर आपको पसंद आया है ट्रेड तो। आई एम प्रीटी श्योर नो वन वुड हैव गॉटन टाइम टू एंटर द ट्रेड आल्सो बिकॉज हाउ स्विफ्टली एंड क्विकली दिस हिट टेक प्रॉफिट, बट या हो गया हिट। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ तो क्या ऐसे हम और खींच सकते हैं इस ट्रेड को? चलो और खींचने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट टारगेट तो हिट हो गया है। दोज हु वांट टू रिस्क प्रॉफिट्स अगेन फॉर री एंट्री, तो ये ट्रेड ट्राई ट्राई कर सकते हैं। You have a double top with RSI divergence. So अगर हमने अर्ली एंट्री नहीं ली होती तो दिस वुड हैव बीन द ट्रेड। सो रिस्क फ्री हो गया बिकॉज पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट था, सो आई डोंट माइंड टेकिंग दिस ट्रेड एज अ रिस्क फ्री ट्रेड। ठीक है, because our conditions are still being met. We have an N pattern or a double top. We have a bearish RSI divergence. We have a good confirmation candle as well. तो let's see ये play out होता है कि नहीं। स्ट्रीम लाइक कर दीजिए गाइस, लाइक कर दीजिए स्ट्रीम। और ये तीसरा बंदा कौन है भाई, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हु इज द हिडन थर्ड पर्सन हु कम्स एंड वॉचेस ऑल द स्ट्रीम? एक तो यश है, एक मैं खुद हूँ, ये तीसरा कौन है? कमेंट कर दो यार, पता चल जाएगा हमें हु इज द हिडन थर्ड गाय। ओके, दिस इज ऑल्सो कमिंग इन गुड प्रॉफिट्स। ठीक है, एनालिसिस तो हो गई है हमारी, ऐसे कुछ बाकी नहीं है। बीएनबी कवर तो किया था हमने, बीएनबी वी हैड कवर्ड राइट। You have 100 days of consolidation, you have a head and shoulders breakdown, you have a retest of head and shoulders, and you have a drawn liquidity or relatively equal lows over here। तो प्राइस को नीचे आना है इन लेवल्स की लिक्विडिटी पे। ठीक है, तो ये है बीएनबी का हमारा अप्रोच। लेट्स सी ये हमारा जो टारगेट है वो हिट होता है कि नहीं। क्या लगता है गाइस, होगा टारगेट हिट? कमेंट कर दो यस और नो। टीपी और एसएल कमेंट कर दो गाइस। विल इट हिट टीपी और विल इट हिट एसएल, क्या लगता है?
इसको हम एक काम करते हैं टीपी हिट करवाने के लिए। यस, इसे मारते हैं थोड़ा, तो थोड़ा शायद नीचे की तरफ जाएगा। लेट्स हिट इट विद अ हैमर। बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़े हैमर से मारते हैं तो जोर से नीचे चले जाएगा। It will reverse from TP, be close. It will reverse from TP, might be close, might be close. Okay, let's see. अब ये हथौड़ा मैं लेके आया हूँ तो शायद चल जाएगा। 5 मिनट्स है हमारे पास, देखते हैं क्या होता है। ऐसे भी रिस्क फ्री ट्रेड है, हमारा फर्स्ट टीपी तो हिट हो गया, so it doesn't really matter। और एक काम करते हैं, यहाँ पे है ना, एक और जुगाड़ करते हैं कुछ तो। यार मैग्नेट की तरफ है, मैग्नेट इधर आ जाते हैं। इधर हथौड़ा मारते हैं इसको ऊपर से, और नीचे से मैग्नेट को बुलाते हैं, भाई आ जा। अब तो आना पड़ेगा इसको, अब तो आना पड़ेगा इसको भाई। अरे भाई कहाँ रिवर्स हो रहा है। और 3 4 इमोजीज लगाने पड़ेंगे। कोई ब्लोइंग इमोजी है क्या? यहाँ से नीचे बॉक्स भी मारते हुए थोड़ा नीचे, ऊपर आएगा तो मुक्का मार देंगे फिर। ठीक है गाइस, आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फॉर द स्ट्रीम। ये ट्रेड को ट्रैक करते रहना, एंड मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ट्रेड सेफ, बाय बाय गाइस।